Everyone, welcome to the Friday lab class. so we are almost into the uh, uh, third experiment. So the first experiment uh, was many thing was discussed about function and array, object, class, and in the second program also the aim of the both the program is the same. Only difference is in the second program, uh, from the set of values a 5 was minus, and in the first program set of values was there and plus plus increment was performed. And in the second program, in the second experiment, the plus plus property was not written again for the second experiment. There is a class which contained the plus plus code that was inherited into the second program. In order to do this, few concepts have to be clear about what is a class, what is a object, and today we will discuss on a topic called constructor. What is a constructor? So constructor is a important topic. It is a very important, means very vital. Knowledge of constructor is important. So what is a constructor? So definition of constructor, if you have to know what is a constructor, basically a constructor is a function which have the same name as the class in which you write the constructor. So what is a constructor? The definition constructor is that a constructor is a function whose the name of the function is exactly similar with the class name where you write that particular constructor. So in this particular case, in this example, there is a class called my class. M is capital, C is capital, my class, and there are two functions inside this class. There are two functions. One is of course the main function, and one is this constructor function. What is a constructor? It is a function whose name is same with the class name where it is written. So this particular class, this is the constructor. Now there are certain more properties that to keep note of in constructor. Firstly, a constructor should always be public. A constructor cannot be private or protected. It should always be public. Constructor should always be public. That is the first rule. Constructor should always be public. And secondly, there should not be any return type in front of the constructor. Not even void. No type should be mentioned with the constructor. No return type associated with constructor.
no return type is there for a constructor, not even void. So no integer also, no float, no class, no return type actually. So it is an important point. So what we have discussed, a constructor is a function inside a class. So function can be written only inside a class. So a constructor is a function whose name is same with the class name in which it is written. It's the name should be same. Second point, name should be same with the class inside which is written. If you follow this, that means that is a constructor. That name of that function is a special constructor. It is called a constructor. It has got a special behavior. And secondly, it should always be public. It should always be public. And third point, should not have any return type, not even void. That is the means the constructor. It is the rule. That is the rule for the constructor. And then we come to the next point. What are the now? These are the properties of the constructor, and there is one more fourth last point, that a constructor can accept arguments just like any other function. So basically, constructor is a function and only. A constructor is a function. So it can accept input formal arguments. So formal argument like we give for a function, we can give for constructor also. That is allowed. You can give any number of argument and the data type, your choice of data type, that is allowed. So what is the constructor? So again, it is a function whose name is same with the class name where it is written. Second point, a constructor should always be public. That access modifier access is should be always public. Third point, there is no return type in constructor. All function have a return type: void, integer, class, array, some return type. But constructor is should not mention the return type. Even if it is a void, it should not be mentioned. It should not be mentioned in the constructor. That is the third point. And fourth point, we can give formal argument in the constructor. We can give formal argument inside the constructor. Okay, so now what are the now that is the constructor. Now second, what is the use of a constructor? Why is the constructor needed? So when a object is created, when we create a Java object, constructor is the function that is invoked by default. Constructor is a function that is invoked by default. Main function, we know main function is the part where the program starts. Okay, main function is the part from where the program starts. So all function should have the main function. That should all class should have the main function. Now why is the main function main function? Main function means your that you are executing. You should be executing. If you are not executing, then should not give the main function. Like you see in the previous class, in the previous experiment, the parent class of the lab have no main function. Okay, have no main function. But does it mean that the program does not start?
main function is required when we want to make the program executable, when we have some certain user interface going on in that program, or you want that program to interact with the monitor, interact with the screen, accept some input from the user. In those kind of situation, main function is required, so that that program can be brought to the part of the operating system where this thing can happen, that a process can be created, otherwise, means a process, you understand, when you create a process control block and these things gets doing, so that information to be given to the system that a new process is starting, that is possible when main function is there. So so main function is the starting. So a class may have a main function, may not have a main function. If a class have main function, then you can execute, you can write dot slash a dot out, you can write dot slash a dot out, or in this case the execute Java program, or that is the execute button you can press, that means you have the execute. If you don't have the main function, still your program you can compile, your program becomes a like a library file, it is does not become a executable file. If you execute that particular program, you will not get any error, but a process will not be created. And for operating system, if there is no process, then it is not part of the scheduled paging frame and everything. So it is not part, it is not officially a part of the execution environment. If you cannot allow a process to make a means you cannot allow a program to behave like a process. So what is that instruction? Main function. If a program have a main function, that means that program is ready to become a behave like a process. If you don't have the main function, then your program you can compile, it will execute, but it will remain as a means it will not behave as a process. Means it will be there in the memory, but other programs can access the data, can inherit that particular class, it will reside in the memory, it will occupy the memory. But when a process, these things are created, when an executable framework is created, a main function is required. This part is clear to you? Now if a constructor and main function both are there, then what will happen? So as I said, main function, we all know main function is the starting part of the program. And what is a constructor? Constructor and main function, they both do the same thing. Now let me give you example here. Now this particular program, okay, okay, first means understand the definition. What is the purpose of the constructor? What is the purpose of the main function? That is, you got it, that it is the starting, means to make a program executable, so that it can interact with the system, so that it can interact with the user. Otherwise, if a program have no main function, it will execute, it will compile also, and it will execute also, but if you don't have the main function, then you cannot do cout, you cannot do printf, scanf, those things are not allowed. You cannot write these things. Means your program will not be means having that process, it will not become a process, so it will not have a starting point, means your program will not behave as a executable file. It will only be execute when someone else get when someone else start it, कोई उसको कॉल करेगा, कोई उस फंक्शन को कॉल करेगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, इफ देयर इज नो मेन फंक्शन.
if suppose एक class have no main function but उसमें बहुत सारा function है, 10-12 फंक्शन है लेकिन मेन फंक्शन नहीं है, तो क्या होगा अगर मेन फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, व्हेन इज सम एल्स फंक्शन इन्वोक इट देन ओनली वो क्लास का फंक्शन शुरू होगा। उसका कोई चाबी देने वाला नहीं है, लेकिन एक इफ ए क्लास हैव ए मेन फंक्शन दैट मीन्स वो क्लास को प्रोग्राम को चलाने के लिए जो चाबी चाहिए वो मेन फंक्शन देता है। अगर क्लास एनी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो वो चाबी कौन देगा, कोई दूसरा प्रोग्राम एक्सटर्नली उस प्रोग्राम को इन्वोक, समवन हैव टू इन्वोक इट और समवन हैव टू इनहेरिट इट, तभी जाके वो फंक्शंस को उसका यूज़ होगा, नहीं तो मेमोरी में वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। इफ देयर इज ए मेन फंक्शन इन ए प्रोग्राम दैट मीन्स उसका फैसिलिटी है, तुम चाहे तो उसको चाबी दे के उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो, that is the you can start that program without the help of any other external inheritance or any other external invoke to function, because main function के लिए invoking का जरूरी, हम लोग कभी main function invoke नहीं करते हैं, we never invoke, we invoke user defined function, if you want to add, if you want to subtract you invoke, main function you do not invoke। कोई भी आज तक कोई भी प्रोग्राम ऐसा होगा जहाँ पे यू हैव नेवर इन्वोक मेन फंक्शन, बिकॉज दैट इज द उस चाबी जब एज सुन एज यू राइट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम इट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर उसमें मेन फंक्शन नहीं है तो दूसरा कोई प्रोग्राम को तुमको स्टार्ट करना होगा, उस प्रोग्राम से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना होगा इनडायरेक्टली। इफ देयर इज ए मेन फंक्शन दैट मीन्स यू कैन डू इट। Now what is the use of the now constructor, why is the constructor needed? Constructor is needed, now constructor is a special property of class, ये सिर्फ क्लास में ही होता है। so constructor is needed when there are lot of values, when there are lot of values in the class and before starting the execution you want to initialize those values। तो कोई तुम्हारा डाटा सेट है, यू हैव सम डाटा सेट विच यू वांट टू इनिशियलाइज, मे बी यू वांट टू डिलीट एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन। कोई बफर है, तुम बफर को खाली करना चाहते हो, कोई बफर है, तुम उसको फुल डिक्लेयर करना चाहते हो, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम यू वांट टू टेल दैट बफर इज फुल, और बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम यू वांट टू टेल buffer is empty, or there is a array you want to delete all the element in a array, or there is a array you want to sort the array before proceeding with the class whatever program is written, so that user को नहीं करना पड़े, user don't have to do it automatically। Suppose you are a programmer, you are writing a program and there is a user interface, press 1 for adding, press 2 for deleting, press 3 for this, 4 or 5 this, but सपोज आई एम ए यूज़र, आई डो नॉट नो मीन्स बैकग्राउंड हमको नहीं मालूम, हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्ट, सो यू शुड हैव सम वे where suppose every time I execute my program, before executing the array element, before me someone else also suppose execute your program, then that data should be deleted so that I can execute my program, otherwise वो तो सेम डाटा हमको मिलेगा, ठीक है। सो वो कैसे होगा, हाउ टू डू समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ द यूज़ ऑफ ए कॉन्स्ट्रक्टर। सो कॉन्स्ट्रक्टर इज इन्वोक लाइक मेन, जब जैसे हम लोग मेन फंक्शन कभी मेंशन नहीं करता है इन ए प्रोग्राम, कॉन्स्ट्रक्टर भी हम लोग मेंशन नहीं करते, इट रन्स ऑटोमेटिकली एज सुन एज यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जब तुम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो यूज़र, इफ यूज़र डोंट वांट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इफ इन योर कंस्ट्रक्टर सपोज देयर इज़ ए सिक्योरिटी प्रोग्राम, तुमने एक सिक्योरिटी रूटीन लिखा है, यू हैव रिटन ए सिक्योरिटी रूटीन, and whenever that program starts you want to check that the firewall and everything is okay or not. Suppose you have written a small program like this, suppose very example, very common example,
which you can understand the use of a constructor. So as a user, I may not be aware of these concepts of security, firewall, and this and that, Windows or Linux or whatever operating system it is. I may be knowing about Windows, but I may not be knowing on Linux. So as a programmer, a advantage you can take with the help of a constructor is that all the firewall, even if you can check that, because constructor is a function that is having the same name with the class. तो जैसे ही तुम क्लास का नाम लिखोगे, वो कंस्ट्रक्टर अपने आप वो प्रोग्राम जावा उसको स्टार्ट करेगा. सो यूज़र कैनॉट अवॉइड इट. यूज़र उसको अवॉइड नहीं कर सकता, वो नहीं बोल सकता है विदाउट कंस्ट्रक्टर दैट इज जावा इज नॉट वर्किंग लाइक दैट. एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टर इज द core concept of of the class. Without a constructor, the class does not get space in the memory. It is the constructor only. इसी का नाम ही है constructor. This is the constructor. So if you want to initialize something, if you want to free some memory space, अगर तुम्हारा program start होने से पहले suppose you want 100 byte of memory free, and you want to check whether 100 byte is available or not, so that बाद में program problem ना हो, तुम उसको यूज़र के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते. then what you do in the constructor, you write this particular program that to check memory, means whatever initial stages you want to perform, which is very compulsory, which is very core programming, and which is you don't want to leave it to the user, because kuch something like that. Okay, something like that. So constructor, if you write program in constructor, it is executed. So basically in constructor, it is executed before doing anything else. तुम दूसरा कुछ भी करने से पहले वो उस that particular class constructor is started first. And what are the now constructor always started first, means there is a rule why to use a constructor. It is not universal, means it is not hard and fast that you will use constructor for doing this and that only, and not for doing if else, not for doing for loop. ऐसा कोई restriction नहीं है. In the constructor you can write any program you want, but you see constructor का कोई return type नहीं है. So even if you do some calculation, उसका return type ही नहीं है. Okay, so what is the best use of a constructor? ये program सबसे पहले start होता है any class. So what is the use of constructor? To do some initialization. कोई variable है उसको तुम zero करो, कोई array है तुम उसको delete करो, कोई memory garbage है तुम उसको delete करो, कोई buffer वगैरह है तुम उसको empty करो, कोई memory space तुमको चाहिए 100 byte, you initialize that 100 byte, or you make a memory of 100 byte. वैसा करके you initialize. जब तुम class when the program execute, you can initialize के लिए चाहिए. And what is the name of the constructor? Its name is same with the class name. Clear? And how to invoke a constructor? You कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं करना होता है. दिस स्टेटमेंट इज द इन कंस्ट्रक्टर. ये जो स्टेटमेंट है इतना दिन से देख रहा है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर. दिस नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम विद द क्लास नेम. विदाउट डूइंग दिस यू कैनॉट विदाउट डूइंग दिस तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते. दिस यू कैनॉट अवॉइड इट. न्यू कंस्ट्रक्टर, ये है कंस्ट्रक्टर. न्यू माई क्लास, इट इज ए कंस्ट्रक्टर. तो अभी x का वैल्यू, नाउ दिस इज ए प्रोग्राम, दिस इज ए स्मॉल प्रोग्राम. okay, so let us see what is the function of this program. So in this particular program, name of the program is my class, and there is a constructor in this my class that is accepting a variable x is equal to 5. what is x? ये x. तो ये कंस्ट्रक्टर जो है इसको इनिशियलाइज कर देगा x इज इक्वल टू 5. तो उसके बाद आई वांट टू आउटपुट दिस. सो आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस माय ऑब्जेक्ट. इसका इस ऑब्जेक्ट माय ऑब्जेक्ट न्यू क्लास. सो एक मिनट.
mm, okay, yes. So can you able to follow? There is a constructor. What is the purpose of constructor? To do some basic things like initialization, deletion, गार्बेज डिलीट करना, मेमोरी बफर चेक करना, फायरवॉल चेक करना, ये सब मीन्स इनिशियल वैल्यूज दैट ए पर्सन मे नॉट बी ऑलवेज रेडी टू डू हिमसेल्फ, मैनुअली पॉसिबल नहीं होता. सो यू कैन डू ऑटोमेटिक. इट विल स्टार्ट एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. सो अभी x का वैल्यू ये 5. तो ये फंक्शन कॉल, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए constructor is a function, and function can start only when you invoke it. So how to invoke a constructor? So by writing the new keyword, new my class, new my class. So this is the constructor. अभी in the place of my class तुम दूसरा constructor भी लिख सकते हो. तुम दूसरा, यू कैन राइट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर ऑल्सो. डिफरेंट कंस्ट्रक्टर मीन्स कोई दूसरा फंक्शन का कंस्ट्रक्टर. सो ये थोड़ा डीप नॉलेज में आ गया हम लोग. तो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर. सो if you so ये इसको टाइप कास्टिंग, इट इज सेड इज टाइप कास्ट. दिस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट इन लेटर एक्सपेरिमेंट यू विल सी सम टाइम दैट ये दोनों मिल नहीं खाता है. कभी कभी ये यहाँ पे माई क्लास है, कभी कभी यहाँ पे योर क्लास है, कभी कभी यहाँ पे माई क्लास, समटाइम हियर इट इज़ योर क्लास. तो इसका क्या मतलब हो गया? दैट इज कंस्ट्रक्टर दूसरा इन्वोक किया है, दूसरे क्लास का कंस्ट्रक्टर को इन्वोक. कंस्ट्रक्टर ही इज द ओनली फंक्शन जो मेमोरी क्रिएट करेगा, दैट विल फ्री द मेमोरी. दैट वो तुम्हारा क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट इट इज़ नो यूज़. जस्ट बाय राइटिंग द क्लास इसको यूज़ नहीं कर सकते. ओनली इनहेरिटेंस यू कैन डू इट. इफ़ यू डोंट हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, वो क्लास का यूज़ सिर्फ इनहेरिटेंस में ही आएगा. लेकिन उसका उसका फंक्शन कोई यूज़ नहीं, मीन्स उसका ओनली फॉर इनहेरिटेंस पर्पज़ ओनली. इफ़ यू वांट टू मेक योर क्लास फॉर द पर्पज़ ऑफ इनहेरिटेंस ओनली, खुद भी तुमको यूज़ नहीं करना है तो ही तुम ऐसा प्रोग्राम लिखोगे. कैसा प्रोग्राम लिखोगे? जिसमें ये कंस्ट्रक्टर दूसरा मीन्स डिफरेंट different constructor. So this particular constructor my class. So and this is the data type my class. So this particular constructor creates the memory. ये memory create किया है. So these things are not required, but that is the purpose definition of and definition and significance of constructor. Two questions are important for exam. What is the definition of a constructor? You have to write the name of is a function whose name is same with the class name. It have no return type. It should always be public and it can accept formal argument. That is the definition of constructor. What is the significance of constructor? It allowed to initialize values and it creates memory for the object. This is the two most significant purpose of constructor. So यहाँ पे this is the constructor. So you see this output. It is 5. If I make this to be 15, if I make this to be 15, then I execute. So 15. So you see this is the constructor inside which some value I can initialize. And so this means this is the fixed, this value is the fixed x15 is later on you can change it. That is different. Later on if you want you can change it, these things, but that is the purpose of, that means this is just the purpose of, that is the purpose of constructor. You can initialize. This is a simple initialization. In real world, in real time programming, constructor plays a very important, means very crucial role in doing memory management. If there is any free memory, just find the free memory, delete the free memory, memory dumping. These things are done by the constructor.
so before starting the program, before letting the user to inherit it to do this and that, ऐसा. So anything to ask regarding constructor? So this is the first experiment of the constructor. We will now do the second experiment. So I am using again one important thing. I am using an online Java editor. Okay. jdoodle.com. कोई किसी किसी का you are telling NetBeans you have problem in NetBeans and problem in Eclipse. Eclipse you use नहीं और you are not able to execute Eclipse and this and that. So at least ये तो करो online Java editor. I am doing it online. This is an online editor. So now what is this program is doing? Now this program is doing. Now यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है. ये वैल्यू कहाँ से आएगा? ये वैल्यू यहाँ से आएगा. This one value my class. It is called a parameterized constructor. It is the parameterized constructor. Parameterized constructor. If you remember definition of constructor, the fourth point, it can accept formal argument like the normal function. So a variable y. So this is the variable for the class x, and y is the coming from the outside, and this is the x is the variable inside the class. So what is the value? 5. If I execute 5, if I give here 15, so this is the uh, now if I can do x, I can give two functions also, x equal to, so you can write here normal programs, but so you can give any number of arguments, you can use them inside the constructor. So 20. What is this program? Let us understand this program. So firstly, it is a class. It is a class, my class. It have a variable x. Data type is int. There is a constructor. How to know this is a constructor? It have the same name with the class name. This name and class name is the same. That is the way to identify it have no return type. It is always a public, so it is a constructor. It have two formal argument y and z, and y plus z is the value initial to x. X is equal to y plus z. Now who will give this y plus z? So you remember constructor is invoked at object creation. Constructor is invoked at object creation. So what is the object creation? This particular my object belong to my class, new my class. This is the constructor. ये जो constructor, this is the constructor. As soon as you write it, this will get invoked. No need to no need to call the constructor. When you do the execute button, when you run this program, as soon as the system see there is a constructor, it invoke this particular constructor, and it start. No need to call it. When you create the object, it automatically get link. यहाँ पे link आ जाएगा between this line number 9 and line number 4. There will be a link as soon as you execute, because it is a constructor. It is a constructor. So constructor is invoked as soon as we create the object of this particular class. So some programs तो अभी बोलोगे सर दूसरा प्रोग्राम में हम लोग constructor नहीं लिखा है. Constructor if you don't write, Java gives a blank constructor itself. Constructor नहीं लिखोगे, so
जावा अपने से एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, इट विल जावा विल पुट ए ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, ये जो है because without constructor so it blank, this is a blank constructor, it is a blank, it is a blank constructor. So if you don't give the constructor yourself, so a blank constructor will be there. This is called a default constructor, this is called a default constructor, it is a blank, it is a blank constructor. So blank constructor का काम क्या है, अभी तो ये तो कुछ इनिशियलाइज भी नहीं कर रहा है, सो सर इसका क्या, ये मेमोरी एलोकेट करेगा, दिस विल एलोकेट द मेमोरी विदाउट द कंस्ट्रक्टर. सो ये जो फंक्शन है ये मेमोरी एलोकेट करके इस ऑब्जेक्ट को देगा, माई ऑब्जेक्ट. सो जब हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं, सो व्हेन वी एलोकेट द मेमोरी वी tend to initially we some give some values in that particular memory. कि सपोज से कोई मेमोरी इनिशियलाइज हुआ, कोई मेमोरी क्रिएट हुआ, तो उस मेमोरी का टोटल साइज कितना होना है, उस मेमोरी में कौन सा डाटा ऐड होना है, उस मेमोरी का फॉर्मेट क्या है. सो दो सम डिटेल्स you can or you tend to give for doing some advanced level programs. I hope you are following uh, why there is the why this constructor is blank, we have not initialized. So it is up to you, if you want to initialize some value you initialize, if you want to use the constructor you use. There is a concept of constructor very important in object oriented programming, and if your knowledge is very strong, you can constructor you can exploit, and you can do so many initial activities without even the program starting. जैसे I said, firewall checking, firewall on and off, memory creating, memory dumping, buffer vacancy checking, stack का full overflow underflow check करना, these things constructor. Then it helps means the making the things faster, and that is the you can also tell it is the variable initialization. The purpose of the constructor is the variable initialization. And second part of the constructor is it create the memory, that is it create the memory for the class. A class, when we write a class, when we create a object, a memory has to be created, a memory has to be created, some amount of byte has to be given to that object, and this particular is done by the constructor. So there is a default, there is a default constructor. It is added, it is if you don't write in the class, so it is assumed that means like ऐसा है ना, when you don't write any return type, it is assumed as the int. ऐसा है ना, function if you don't give any return type in function, it is assumed it is a int. ऐसा okay, this rule I hope you remember, that if you have no return type, अगर you forget to give a return type in front of a function, by default it is not the void. What is it? By default it is int for function. Similarly in class, if you don't give a constructor, so by default it assume it is a blank constructor, so it does not give any error. And if you want to do some program with the constructor, then you can add the constructor like this, and you can give some values, and suppose here x is 5, and this particular constructor is invoked by the keyword of new my class. This is the constructor, this is new my class is the constructor. So in this particular case, and in most of our example, the data type of the class and the data type of constructor is the same. So my class this side, left side also, my class right side also. So the object in the left side or constructor in the right, they are all the same, they are the same.
it is a condition. You can give different also, that is a different concept. There can be different constructor also. The constructor, different constructors. Different constructor means the different memory, different format of the memory, different structure of the memory. If I give here my class, then this particular object will have a different structure. If there is any different class, example your class, then there are some more variable there, so then that constructor will be different. So slowly next classes we will go much understanding will be possible with this. Okay, so so next example. So I hope you can execute your programs now, even if you have not done the first program, second program. If you have not able to install Eclipse, NetBeans, at least this online editor you can try execute your programs. Okay, now here there is another class called car. There is a variable model of the car, then name of the model. Then there is a constructor car. This is the class name car. It's the constructor car. Then there is a year and the string. And these values, how to give these values from here, from the constructor new abhi new car 1916 Mustang. So if I execute it, so you get this output. So so how to output this? By the object my car dot model, my car dot model name. your value कौन देगा? constructor. Without constructor also you can without constructor you can give values here also, but since we are discussing constructor, so with the help of constructor you can give values here. अगर तुम value यहाँ पे दोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये फिक्स्ड हो जाएगा, ये यूज़र डिफाइन नहीं होगा. अगर इफ़ यू गिव कंस्ट्रक्टर देन you can user define. So whatever you can change these values time and again, because ये जो प्रोग्राम है ये तो तुमको एक्सेस करने को मिलेगा नहीं. अगर तुम यूज़र है तो तुमको कोई क्लास का ऑब्जेक्ट ही तुम क्रिएट कर सकोगे. इफ़ यू हैव ए क्लास, उस क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं. हाउ? बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास. हम तुम्हारे क्लास के अंदर में जाके के प्रोग्राम को ऐसा नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट लीगल. इट इज़ नॉट लीगल बिकॉज इफ़ इट इज़ ओपन सोर्स देन इट इज़ डिफरेंट थिंग. ओपन सोर्स का मीनिंग ऑल कोड इज़ विजिबल, जिसको जो मानना है उसको चेंज करो. लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हैपेंस दैट वो हम लोग को कोड ही प्रोग्राम ही समझ में नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा है. इतना ओपन सोर्स नाम से ओपन सोर्स है, बट it very difficult to at least means very difficult to edit their open source codes. Programs are very long and they are divided into different modules. So हमको क्या मिलेगा? हमको ये constructor ही मिलेगा. वो हम so when you go to learn any programming language, उस programming language में कोई function है, कोई inbuilt library है, तुमको उसका structure मिलेगा कि उस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हम लोग को क्या क्या पैरामीटर देना होता है, कितना पैरामीटर देना होता है. वो प्रोग्राम का सोर्स कोड नहीं मिलता. तो ये जो हम किया है ऐसे इज इक्वल टू दिस इज मॉडिफाइंग द सोर्स कोड. ये हम लोग सोर्स कोड मॉडिफाई किया है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए. ये लीगल नहीं है. इसमें बहुत रिस्क है क्योंकि प्रोग्राम अगर तुम ऐसा छोड़ोगे कोई अनजाना आदमी ही कम्स एंड डिस्ट्रॉय योर होल प्रोग्राम. सो बेस्ट सेफ प्रैक्टिस टू गिव ए कंस्ट्रक्टर, बिकॉज कोई यूज़र आएगा वो अपना कंस्ट्रक्टर अपने हिसाब से इसमें वैल्यू लगाएगा और ये वैल्यू इसमें सेट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल.
next example, you can write overloaded. If you remember polymorphism, overloaded constructor, you can write overloaded constructor also, means एक parameter only, एक parameter. ओवरलोडेड का मीनिंग क्या था? ओवरलोडेड और पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ओवरलोडेड और पॉलीमॉर्फिज्म? सेम नेम, फंक्शन का नेम सेम है बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। now इसमें क्या है, इसमें देयर आर टू कंस्ट्रक्टर, इसमें दो दो कंस्ट्रक्टर है। सो लेट अस सी क्या होता है। सो 1969 मुस्तांग दिस टाइम डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम सिर्फ 1969 लिखेगा तो क्या आएगा? सो 1969 जीटी आया इस बार। व्हाई? बिकॉज ये जो सिंगल इंटीजर वाला है, ये वाला कंस्ट्रक्टर है। देयर आर टू कंस्ट्रक्टर। सो तो दो टू ऑप्शन यू हैव हाउ टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्टर। आइदर यू गिव द ईयर ऑफ मॉडल एंड नेम ऑल्सो यू कैन गिव। अगर अगर तुमको नेम मालूम नहीं है, सिर्फ कार का मॉडल मालूम है, सो तुम कार का मॉडल यू एंटर द मॉडल ओनली, देन ये इनबिल्ट नेम विल बी देयर, कंस्ट्रक्टर उसको देगा एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सो हियर 1970 इज गिवन बाय द यूज़र। तो यूज़र को ईयर मालूम है, मॉडल का नेम मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, एज्यूम उसको नेम मालूम नहीं है। सो इन द कंस्ट्रक्टर यू एज ए डेवलपर, सो ये तुम इनिशियलाइज कर दिया है। तो ईयर यूज़र को यू आस्किंग द यूज़र। सो यूज़र और प्रोग्रामर क्या हो गया? प्रोग्रामर हो गया ये पार्ट, दिस पार्ट्स मेन कोडिंग पार्ट। यूज़र क्या हो गया? ये कंस्ट्रक्टर ये तो मीन्स उसको सिर्फ प्रोग्राम स्टार्ट करना है। यूज़र क्या करेगा? स्टार्ट करता है। प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करता है? हम लोग उसको ए डॉट आउट करता है, डॉट स्लैश ए डॉट आउट। अगर तुम लिनक्स का कोड खोलोगे, कोई भी प्रोग्राम उसका तुमको कोड का मालूम नहीं हो, लेकिन तुम उसको कंपाइल करके डॉट स्लैश ए डॉट आउट टाइप करोगे, तो कंप्यूटर नहीं देखता है कि प्रोग्रामर डॉट ए डॉट आउट कर रहा है या कोई गेस्ट आके ए डॉट आउट कर रहा है। कोई भी प्रोग्राम है उसको तुम एग्जीक्यूट ए डॉट आउट करो, वो स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ वन वे ऑफ स्टार्टिंग द प्रोग्राम। सेकेंड वे ऑफ स्टार्टिंग द प्रोग्राम क्या है? इफ़ इट इज़ ए क्लास बेस्ड प्रोग्राम, अगर तुम्हारा ऐसा है, मान लो लिनक्स का प्रोग्राम खोला तुमने, उसमें जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग जैसे लिनक्स का प्रोग्राम खोलते उसमें डॉट स्लैश ए डॉट आउट। ओके, प्रोग्राम इट इज